Well, hey guys, good evening. A very good evening to all of you. Hope you can hear me and hope you can see my screen as well. Um, we'll be starting in a minute or so. If one of you may confirm or if you can say if it is not visible, whatever, anything works. I want to make sure that the thing that I'm speaking that is at least reaching all of you. So can you all hear me? So I can see that it is visible, but I can't really check the voice. So I hope I'm audible. If you cannot hear me, do let me know. If the voice is not reaching, then you can maybe write. So quite many of you are here. We can probably start now. Before starting, can you all hear me very clearly? Any noise disturbance, anything? Is my voice absolutely clear to all of you? Maybe you can write it in the chat as I can't understand. Am I audible, guys? Now, please feel free to, write down yes or no. It takes a simple, binary decision and simple use of keys on the three keys on the keyboard, or maybe two keys. You can hear me, right? Like, is it really the case that you cannot hear me? Am I audible? Now, this is a very principal question. If this question remains unsolved, then we cannot proceed, right? Am I audible? Now, how can I understand? Are you not allowed to write on the chat? I never heard something like that. Okay. Oh, sorry. Means it was not upload. I'm sorry about it. It was not getting updated. Yeah, too many things. Great. Well, sorry for the delay. So we are going to, study a very interesting topic, binary search. So now I can see, and I'm really sorry for all the things. So yeah, now we are going to see binary search and what exactly is binary search. So binary search basically means a technique of searching. Now what is searching? When we have to find an element, we search over a range. We search in a certain place. Suppose if you are searching a book, we choose our cupboard in order to search it. We don't search it everywhere else. We only search it in the places where it can be present. And this is essentially any a way of searching. So suppose when we are searching on the site of Amazon, we are trying to find anything, or suppose you have done a Google search. What Google search does is, when you have entered a keyword, when you have pressed the enter key, what you find is that it searches on its immensely huge volume of repositories, and it finds out the things that are forming the best match with your keywords, right? So just as Google search works, and just like any other search engine works, what is essential is you have something which you want to search, and that can be referred to as the key or the target or whatever, and you have some kind of a search space. What this search space is, basically the volume in which you have to search. This can be a very small place, a very small container which contains only some information. This can contain gigabytes of information, so it can contain huge volumes of information, gigabytes, terabytes, and so large quantities of information. And the task about searching is to search it over here.
Now we will basically delve into the detail of this particular search that we are talking about. What is binary search? Binary search is a special kind of searching where we basically say that we want to use a binary fashion during searching to make our task of searching easier. So I guess you all are conversant with the linear way of searching. What is the linear way or the blunt way of searching? That you use a key, you first compare it with the first element. If it does not match, you proceed to the next element. If it does not match, you proceed to the next element, and so on. It proceeds till the end. So what you can directly figure out from here is, it will check through all the elements, the key will be compared with all the elements, and thus the decision shall be made whether this element has been found or not. Right? That's exactly what linear search is. Now when we come to binary search, we introduce certain knowledge about the search space to improve our idea. So think about it, or to improve the efficiency of our task of searching. So think about it, that you need to search a word in a dictionary. You have a dictionary where you have pretty much this kind of a structure. You have some words beginning with A, then some words beginning with B, and so on up to some words beginning with Z. And you basically want to search these elements. You know that not the same number of elements start with A than they start with B. You know that there are more elements that start with A than that start with B. You know there are more elements that start with S than that start with Q or R. So from these informations you can say that, okay, we can't determine that suppose we require a particular word, say snollygoster. It's a word which came to our knowledge from Dr. Shashi Tharoor. So suppose we use this word and now we want to search where this word is. We definitely cannot deterministically say that this will be some xth word, some xth place in the dictionary it will occur. But we can say something, that if we find out or forget about how we can say this, when we search in the dictionary, think about it, when we search it in the dictionary, I don't know if you like nowadays we can definitely just click on Google and it gives us the answer, but when we search on dictionary there is a certain way in which we search. We never open the dictionary on the first page, unless like it is a word like apple or something with A. We don't open it at the first page. We have a certain way of approaching it. What we say is, just find out a particular page, and if you see that these words which are on this page are ahead of snollygoster, rather they are starting with suppose P, suppose they are starting with P, so we say that just forget this part and just proceed to the next part. Why? Because we say that from this P we can understand that this left part, they are such words whose first letter will fall in the range of A to P. When we see the words here are beginning with P, we say that the words in the left are beginning with either A or B or C or up to P. They cannot start with Q, they cannot start with S, they cannot start with Z. But towards the right we can say that these elements are basically showing the opposite property. These elements, they are starting with either P or Q, R, S, T or something greater. And this is the difference that we figure out, that the dictionary has got a special property. The dictionary has got a special property that the left words, they have a particular property that the first letter is less than equal to P. The second part, which is towards the right, they have got a certain property, and these two properties are contrasting. So, and this helps us eventually to say that, okay, when we are searching for snollygoster, we don't need to really search through this half of the dictionary, which again contains quite many words. We can directly ignore it. Suppose we randomly open this page, we see some pineapple and potato and things like that are there. So we can directly say that you need to focus on the pages which are towards the right. And now think about, if you have used the dictionary in your early days, think about it, what exactly did you do? You did exactly this thing. You opened up the page somewhere in between, and then on seeing the words which are coming in front of you, you decide whether to focus on the left half or on the right half. Now suppose you find something like this. You have opened up the page in the between,
somewhere over here, and here you had find a word, suppose pine, and now you say that okay, this part is important to me, let me search over here. Now you have searched it over here. What do you get from here? Here you may get, it will return you something like suppose, so basically the words are with W, W, V, W, suppose it's like that. So what do you say? There are two things that you can borrow from here. One is that the words to its left, now they are only pertinent to you from the left end to this particular position. They are only the words which are important to you. Snollygoster will definitely lie to the left of world, and so you definitely want to search from here to here. But again, what do you know? That already you have excluded this particular range. You know that this particular range is never going to be important to you. Why? Because the word pine definitely should come before snollygoster. Snollygoster cannot come over here. So what can you say? Now effectively, this is the range which is important to you. Can we say this? And we know that in this page you haven't found the word. So basically, precisely speaking, this is the place which is important to you. So what do you say? What do you actually infer from here? That by this word you get to know that towards the left you will find snollygoster, and using the previous result of pine you come to know that towards the right you are going to find snollygoster. So essentially what did you do? In the first step, you first of all excluded half of the data set. So if you land up exactly in the middle, you can say with confidence that either the right half is impertinent to me or the left half is impertinent to me. So directly you say that if I have given you the task of searching in 1 million words, you will directly scrape out 500,000 in the first step. You can directly say the first 500,000 or the last 500,000 is not important to me and I don't require that. So at every step, the next step, you have only this half pertinent to you. Now you saw the value of world and you said, okay, now this half is not important to me. I want to focus only on this half. So this is basically the idea. Where at every step what are you doing is, over here suppose there were n1 different words. There were n1 different words. The moment you have reduced, we have removed the last half, you essentially say that I will keep only the first half, which is n1 by 2. So irrespective of the initial space that you have started with, by the end of this single checking that what is the current word that I can find, and is that current word greater than my snollygoster target word or lesser than my snollygoster, I can decide and I can reduce the search space to the half of it directly at one step. So what do you see? If it is of, suppose it is 2 to the power 10, the total number of words, 2 to the power 10 means it is 1024. What can we say? We can directly look at the middle element and we can reduce it to 2 to the power 9. Then whichever part remains pertinent to us, important to us, we will look at it and read its middle element and then figure out whether the right half or the left half is important. Right half of 2 to the power 9 means 2 to the power 8 elements, left half of 2 to the power 9 means again 2 to the power 8 elements. We'll again say, okay, whatever is the inference, 2 to the power 8 elements will remain. What is another inference? That suppose we find the element exactly in the page that we are seeing. So if that happens, then okay, we have completed it in 2 steps. Okay, but suppose the other case that we don't find it so easily, then what is the maximum number of steps that can be taken? It can be figured out from this particular observation that every time the number of pages is getting slashed down to half of its current number, and eventually we have this reducing to 2 to the power 0. From 2 to the power 10, we have reduced it to 2 to the power 9, then 2 to the power 8, and so on up to 2 to the power 0. So what can we say? In 10 steps, we have actually covered the entire procedure of reducing our search space to exactly that single page where that word is contained. यही तो हमें चाहिए ना, जब हम चाहते हैं किसी एक वर्ड को फाइंड करने, यही हम चाहते हैं कि वो वर्ड हमारे सामने निकले, whether you are searching for erudite or something, what fancy word you can think of, whatever you are searching, you want to reach the page, and you know your dictionary has so many pages that सारा अगर देखना होगा तो इंटरेस्ट चला जाएगा. If it is unsorted and every page you have to see, फिर इंटरेस्ट चला जाएगा. फिर वही गूगल रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो छोड़ दो, एक वर्ड ना जाने तो अच्छा है. तो something like this. But the fact is, the moment you see that the dictionary has this property
to tell you at any point of time that what is the difference between the two categories that word is breaking the dictionary into, or to tell you that what is the difference between the first half and the last half. Whenever there is a significant property, you can utilize this kind of a technique where you say that I will proceed to some middle element, I will decide which half I have to go, and at every step I'll do this. Whenever I get the half, the next step will be go to the middle element and decide which half. So the important point to tell you was that there is some property we are relying on. Can any one of you give it a hit? What property exactly we are targeting over here? What property exactly we are targeting over here? Can any one of you try that in a dictionary, or in a, suppose you have a very large repository, you are searching for files. Suppose my own, I don't know, yeah, there you go. So I have to, where can I, okay, yeah, here. So suppose I have to search some applications. So what can I say? I will definitely search by the names. Okay, good answer by advanced gamer, sorted. So yeah, quite near. So we can see over here that when we are searching for something, suppose I want to search for the app pages. So what will I say? That I can directly, when I reach mission control at random, if I reach mission control, I can say forget what is there before it, focus on only what is there after it. We can figure out that way. If we sort on the basis of date, our date, the date on which the application or basically any file has been created, we can find in that manner that okay, I have created it in such a point of time. Now if I get a certain file, so suppose I open my downloads and it is totally on the basis of what I have viewed last. Suppose I open a certain file and from there I see that okay, this is the previous 7 days. I am interested in an older file, so I open something older, and then what I can say is, for any such file, if they are sorted by date, I can simply check the date over here. I can simply check the date over here from the get info, and using this date I can say that whatever lies on top of it, they are of an earlier date, and whatever lies below it, they are of a later date. This is the idea that I can apply. So this is basically the idea that when I see this file, when I see the details of this file, I can decide whether the top files are important to me or the bottom files. And yes, some property of the array should actually drive this. And as Advanced Gamer has mentioned, sortedness is one such thing which actually drives it. But more precisely, people prefer to use a more generic term, which is monotonicity. And I will tell you why this term is important. There are many people who say that if you think that only sortedness is important for binary search, then you don't know anything about binary search. So it is nothing that radical, but the important thing is to understand what that person wants to say. So when we talk about monotonicity, we say that there is a certain pattern. You might have heard about monotonic curves in your class 12 mathematics. So what happens in monotonic curves is it either monotonically increases or it monotonically decreases. And monotonicity is actually that kind of property which varies in a particular manner from left of the array to the right of the array. Suppose array is containing all the values. So suppose if the values are increasing 1, 3, 5, 5, 6, 8, 9, 10, this is a sorted array. What we can say? That given any element, we can say that the elements to the left of it are less than equal to it, and the elements to the right of it are greater than equal to it. So this particular contrast is what is the takeaway from monotonicity. Monotonicity tells us this particular contrast. Okay. In this case, it is sortedness. But then why did I mention that stupid thing? That sortedness is not essential. We will look at it in 1 or 1.5 minutes. First of all, suppose there is any sorted array. What can you say? That suppose I am searching for a certain thing. Suppose even you are searching in Google, and suppose in the somewhere in the back end, they already have the objects in some database which are sorted in alphabetical order. So what can we say?
Alphabetical order, again we have reached the same alphabetical order. So suppose they are having the numbers, ID numbers, and Google knows which ID number to search. So suppose here you have 55, here you have 68, here you have 123, here you have 10 to the power 3, here you have 10 to the power 4, here you have 3 into 10 to the power 5, and so on, and something like this. So what we can say, suppose we are searching for something like 68. First time we can search over here. Suppose there is a middle element, there are so many elements, and we can say that okay, this is the part which matters to me. Next time I can say that okay, I'll search in the middle element, and I'll say okay, this part is important to me, this part is important to me, not that part, because these values are greater. Then I say that okay, 68, I gradually find 68. So if you think of a smaller array, we can think in this manner. 1 3, suppose this is the array, 1 3 5 5 6 8 9 10. Suppose you search for 10. In the naive way, you have to search up to the last place in order to find 10. What can you say? That how can we improve it? You can say that first start at 5. Then you say that okay, there are 3 to the left and 4 to the right, so it's quite uniform. Yeah, this is sorted, exactly, this is sorted. I'll give a different example to say when it is not sorted. And over here what we can say is this part is important to me. Okay, so focus on this part. And what is the mid element? Either of 8 or 9. वही मीडियन वाली चीज़, दो मीडियन होते कौन सा चुने, तो चूज आइदर ऑफ देम, चूज 8. फिर आपको क्या मिलता है कि 9 and 10 आर इंपॉर्टेंट नाउ, सो चूज 9 and 10. व्हाट कैन यू से, नाउ यू चूज 9 एंड देन यू चूज 10. 9 से आपको क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा 9 के राइट में है, और फिर 10 में आपको मिल जाएगा एलिमेंट. सो यहाँ भी आपको मिल गया. एंड व्हाट वी सेज कि हर बार क्योंकि आप हाफ कर रहे हो, यू हैव दिस काइंड ऑफ अ रिलेशन कि आपको अगर n वाले स्पेस में सर्च करना है, n आइटम्स के स्पेस में, देन दिस इज हाउ इट गोज कि उसको एक टाइम ज़्यादा लगेगा, एक स्टेप पहले लगेगा, फिर बाकी आपको n/2 में सर्च करना पड़ेगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट वी आर सेइंग इज कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर सर्चिंग अमंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 स्टेप मोर देन सर्चिंग अमंग n/2 एलिमेंट्स. ये है हमारा अभी का रेकरेंस. ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम बताते हैं कि ठीक है, चलो इसको भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. टी ऑफ n/2 को इसी में डाल देते. टी ऑफ n/2 क्या होगा, 1 प्लस टी ऑफ n/4. हम वही यूज़ करते हैं, टी 1 प्लस टी ऑफ n/4 एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, समथिंग लाइक 2 प्लस टी ऑफ n/2 स्क्वायर. और ये आप देखेंगे ये कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, टी ऑफ n/2 क्यूब. जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे n/4 को जब आप n/8 के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा. एंड वेयर शैल इट स्टॉप, इट विल बेसिकली स्टॉप व्हेन, जब आपका ये वाला टर्म टी n/n रीच कर जाएगा, समथिंग लाइक दिस, या फिर टी ऑफ 1 रीच कर जाएगा, तब तो और आप आगे फ्रैगमेंट नहीं कर सकते. सो व्हाट यू से इज कि हाउ मेनी स्टेप्स डज इट टेक, n/2 टू द पावर व्हाट will form this 1. So it turns out that k is equal to log of n to the base 2. So this tells that this particular value which was matching with this value, you can now say that this will end when this particular value will reach log 2n. Does this make sense? Does this make sense? So what can we say, एक एलिमेंट, एक अगर सर्च स्पेस है, वहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो you will take only one step. So what will like the total time be for tn? tn के लिए total time है log n plus 1. So that means it is of the time complexity order log 2n. Any doubts till now? I hope no. So ये है basic idea of binary search कि आपके linear search में वो order t of n लेता है, but in this case you have order log 2n. यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं t बाई ये वाला ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 2 से, तो क्या होगा, ये डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसके साथ +1 बस करना पड़ेगा. एंड यू कैन ग्रेजुअली फाइंड आउट कि अगर आप n को कन्वर्ट कर देंगे टू द ग्रेटर, उसके जस्ट ऊपर जो कि नियरेस्ट पावर ऑफ 2 है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा. क्योंकि आप n को अगर मान देते 57, तो 57 के केस में क्या होगा, आप उसको 64 मान लीजिए. 64 के लिए जितना टाइम लगेगा डेफिनेटली 57 के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, राइट. तो 64 के लिए हम देख सकते हैं कि log ऑफ 264 प्लस 1 कितना होता है, इट्स समथिंग लाइक 4 to the power 3, तो 6 होगा, 6 plus 1 7. वी कैन से दिस.
सो दिस इज द आइडिया कि अगर एक नंबर डिविजिबल ना भी हो 2 से, वी डोंट हैव टू फेस एन इशू फॉर दैट, बट ऑलवेज log 2 n स्टेप्स में अपना कंप्लीट हो जाएगा, log of n to the base 2। ये तो रही बात बेसिक बाइनरी सर्च की, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम वो एक चीज़ देख लेते जो एडवांस गेमर ने पूछा है इन दिस 1 आवर सेशन। आई होप आपको लाइक ठीक है, हम देख लेते हैं और एक जो क्वेश्चन है which will settle your idea why not sortedness always. Suppose you have to search an element, suppose you have to search an element in what is that said, what is that called, yeah, rotated sorted array, okay, रोटेटेड सॉर्टेड इंटीजर एरे। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक सॉर्टेड एरे है 1 2 3 3 5 6 7 8 9। रोटेटेड सॉर्टेड एरे मतलब होता है कि लास्ट का कुछ पार्ट बिठा दिया और फिर पहले का कुछ पार्ट बिठा दिया। सो इट्स समथिंग लाइक दिस 5 6 7 8 9 1 2 3 3, ओके। तो ये जो पार्ट है रोटेटेड का मतलब ये होता है कि लास्ट वाले कुछ एलिमेंट्स को अगर हम खींच के पहले बिठा देंगे तो वो परफेक्टली सॉर्टेड होगा। द करंट एलिमेंट इज नॉट सॉर्टेड, बट ये एकदम अनसॉर्टेड नहीं, एकदम वैसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है इस एरे में। एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे, देन द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स विल बी सॉर्टेड, द लास्ट फ्यू एलिमेंट्स शैल बी सॉर्टेड, एंड दिस लास्ट फ्यू एलिमेंट्स इफ यू प्लेस ओवर हियर देन द एरे विल बी कंप्लीटली सॉर्टेड। ऐसे एक एलिमेंट में आपको ऐसे एक एरे में आपको एक एलिमेंट सर्च करना है। थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू सर्च एन एलिमेंट ओवर हियर? सपोज यू हैव टू सर्च फॉर 6 या सपोज यू हैव टू सर्च फॉर 3। आप अगर बेसिक बाइनरी सर्च लगाएंगे आप क्या करेंगे? बीच वाले एलिमेंट में बैठेंगे, 9 में आके डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि ये तो इधर नहीं है तो लेफ्ट में ही रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, आप इधर सर्च करेंगे, सर्च करते करते रात हो जाएगा, इधर आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट? आप डाउट में ही रह जाएंगे कि कहाँ पर कब सर्च करना है। सो यहाँ पर आपने नहीं देखा तो इधर आपको पता नहीं है क्या माहौल होगा। तो इधर भी हो सकता है कि 9 के बाद कोई 10 था, 10 के बाद 1 2 3 3, सो यू डोंट नो कि 9 के राइट में हमेशा सॉर्टेड ही है। तो बात यह है कि 9 के लेफ्ट में भी हो सकता है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये ऊपर जाएगा, फिर कहीं ना कहीं नीचे आके फिर ऊपर आएगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये होगा कि इस पार्ट को अगर हम बैठा ले इधर, ये एरे के एलिमेंट्स है, ठीक है? तो एरे के एलिमेंट्स इस तरफ हम लोग एलिमेंट्स को देख रहे हैं 5 6 7 8 9 1 2 3 3। तो ये जो एलिमेंट्स है ये ऊपर जा रहे हैं, फिर एक ड्रॉप हो जा रहा है 9 से लेकर 1 तक और यहाँ से बढ़ रहा है। नाउ आपका 9 कहीं या फिर आपका जो मिड एलिमेंट है वो कहीं इधर हो सकता है। तो आप क्या फिगर आउट कर पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे कि आपके एलिमेंट इधर होगा या इधर होगा? हाउ कैन यू यूज इट? नाउ द थिंग इज दैट दिस इज नॉट सॉर्टेड। एक तरीका तो है कि आप लेफ्ट से राइट पूरा सर्च कर ले, वहां से आपको आंसर आ जाएगा। कैन यू डू समथिंग इन ऑर्डर लॉग इन? प्रिसाइजली कैन यू यूज बाइनरी सर्च? बताइए कोई। और अगर बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, what property are we utilizing? That is something you need to think about. So binary search is basically as the name suggests कि आप बाइनरी कर दीजिए अपने सर्चिंग प्रोसेस को। There are only two things, 0 1, so there are two halves basically. So currently आप जब कहीं पे भी बैठे हो, you can proceed in two different ways and you choose one way and make your task easier. You divide your task into a smaller task which is half the size of your original task. यहाँ पे what property can you utilize given that the array is not sorted at all? ये array आपका sorted नहीं है, so what is the property that you can utilize? कोई ideas हो तो बोलिए, else we'll start at 7:29 our discussion. Okay, बज चुका है, 20-30 seconds wait कर रहा हूँ. Any ideas you all can share? ओके, सो यही बात है हमारा कि जब हमें रोटेटेड सॉर्टेड एरे में सर्च करना है, दिस एरे इज नॉट सॉर्टेड, बट इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी? कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट
एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे। अगर मान लेते कि पहला एलिमेंट बोथ पार्ट्स बी पे सेपरेटली, ओके, सो आप कह रहे हैं कि बोथ पार्ट्स हमें पता होना चाहिए, राइट। अब हमें पता नहीं है कि ये पार्टीशन इधर पे है, ये पार्टीशन कहीं भी हो सकता है, सो पार्टीशन हमें नहीं दिया है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, यू डोंट नो दैट, आपके पास एक बहुत बड़ा लिस्ट दे दिया है, कहाँ पे जाके पूरा लिस्ट पढ़ने का भी आपके पास टाइम नहीं है, पूरा लिस्ट पढ़ने में वो ऑर्डर एन लग जाएगा स्टेप्स, तो उतना टाइम नहीं है आपके पास। You have been given the entire array, you need to find the element. Can we say that over here, इस एलिमेंट अगर यहाँ पे लाई किया तो इस एलिमेंट के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का क्या प्रॉपर्टी है। हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट वाले एलिमेंट्स हमेशा लेस है, लेस देन इक्वल है इस एलिमेंट से, सो दे आर लेस देन इक्वल टू दिस। एंड फॉर द राइट एलिमेंट्स व्हाट कैन वी से, फॉर द राइट एलिमेंट्स व्हाट कैन वी से, that either they are greater than equal to this mid element, either they are greater than equal to this, or what can we say, basically the middle element which is a of mid, or what can we say कि ये पहले एलिमेंट से छोटे होंगे। इसको अगर a कहे then we can say कि ये वाले एलिमेंट्स जो है ये लाई करेंगे इन द रेंज a to mid, एंड ये कहाँ पर लाई करेंगे, ये एलिमेंट्स लाई करेंगे इन द रेंज 0 से लेकर a तक यूनियन मिड से लेकर इंफिनिटी तक। कैन वी से कि एक पार्ट होगा जो मिड से बड़ा होगा और दूसरा पार्ट होगा जो a से छोटा होगा। तो हमें क्या मिल रहा है कि ये दोनों चीज डिसजॉइंट है, ये इंटरसेक्ट नहीं करते, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन देम। सो फ्रॉम हियर कैन वी ड्रॉ दिस आइडिया कि कोई भी एलिमेंट आप 8 को जब लेंगे ना तब वो क्या पता चलेगा कि पहले एलिमेंट हमारा 5 है जो कि फिक्स्ड है, तो 8 के पहले जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, वो लाई करेंगे 5 से लेकर 8 तक, और जो 8 के बाद रहेंगे वो कहाँ लाई करेंगे, डेफिनेटली 8 के बाद मतलब 9 से लेकर इन्फिनिटी तक, वरना 0 से लेकर 4 तक, 5 से पहले तक मतलब 4 तक, या फिर मान लेते 5 तक। तो ये है बस दो रेंज, एक बस 5 ही है कॉमन, तो 5 अगर सर्च एलिमेंट हुआ तो हम किसी में भी फाइंड कर लेंगे, अगर 5 नहीं हुआ तो इन दोनों में से कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, राइट। कैन यू गेट दिस आइडिया। आप इधर भी कह सकते हैं कि अभी 8 ही होगा, 8 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, 8 9 10 इधर ऐसे चालू हो सकता है 8 9 करके। सो डू यू गेट द आइडिया कि इन दोनों पार्ट्स में भी, लेफ्ट और राइट पार्ट्स में भी अभी भी एक सेपरेशन है। राइट पार्ट्स के दो डेफिनेशन आ गए, इट कैन आइदर बी वेरी स्मॉल और इट कैन बी लार्जर देन द करंट थिंग, और लेफ्ट क्या है, जस्ट स्मॉल, बट ऐसा नहीं कि पहले एलिमेंट से भी स्मॉल हो जाएगा। सो दिस इज वेयर यू ड्रॉ द इंट्यूशन कि दो अलग कैटेगरीज में हम बांट रहे हैं, ओके। सो वही बात है, यू कैन सॉल्व दिस एट इन योर फ्री टाइम कि ये फाइनली कैसे सॉल्व करना है। द आइडिया इज दैट वी आर यूटिलाइजिंग अगेन दैट प्रॉपर्टी कि एक पर्टिकुलर वे में ये वैल्यूज वेरी कर रहा है, एंड व्हाट इज दैट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंक्रीज कर रहा है, एंड देन भी से अचानक ये डिक्रीज करके ये इंक्रीज कर रहा है। सो वेदर यू फोकस ऑन दिस एलिमेंट और यू फोकस ऑन दिस एलिमेंट, अब इस एलिमेंट पर आप फोकस करेंगे तो क्या होगा, इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आप क्या कह पाएंगे कि दैट विल अगेन शो टू प्रॉपर्टीज, जो अगेन वो यूनियन टाइप का काम होगा, आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं, और इसमें होगा द अलग प्रॉपर्टी। हाउ कैन यू फिगर आउट कि ये जो मिडिल पॉइंट ये आपका इधर लाई करेगा, ये इधर, इजी टू फाइंड। आप जस्ट फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लाइक ग्रेटर, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर यू कैन से दैट ओके इससे मेरा ग्रेटर हो गया, लाइक ये यहाँ पे लाई करेगा, इफ द फर्स्ट एलिमेंट ए इज ग्रेटर देन दिस एलिमेंट, व्हाट कैन यू से कि मेरा ये एलिमेंट डेफिनेटली राइट वाले पार्ट में लाई कर रहा होगा। सो इस एलिमेंट के लेफ्ट वाले जो पार्ट होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, एक जो इससे छोटे होंगे और एक जो इससे बहुत बड़े होंगे। और अगर ये मिला कि ये ए से बड़ा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ए से बड़ा होगा दैट मींस इट इज इन द लेफ्ट हाफ, ये जहाँ पे सेपरेशन हो रहा है नीचे जा रहा है उसके लेफ्ट हाफ में है। तो दिस इज बेसिकली द आइडिया। तो एक पॉइंट को देख के हम समझ पा रहे हैं, हम एक इंट्यूशन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि इसके लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा,
एंड व्हेन वी ड्रॉ दैट इंट्यूशन यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे, ऐसा नहीं कि हम पूरा एरे रीड करके फाइंड आउट करके कहाँ पे ये सेपरेशन हो रहा है, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया। बस एक पॉइंट पे हम देखेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड जस्ट दैट यूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट एंड दैट पॉइंट वैल्यू वी कैन डिसाइड क्वाइट मेनी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अबाउट द एरे। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एलिमेंट वो किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा इस पार्ट में। क्यों? क्योंकि ये अगर हम देखें वाई एक्सिस में ये वैल्यूज़ को, तो सिर्फ इस पार्ट को जो कि लेफ्ट में है वो सिर्फ ये वाला पार्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी का पार्ट राइट में ही रिप्रेजेंटेड हो रहा है, जो या तो बहुत बड़े हैं, मतलब सॉरी इससे बड़े हैं जैसे कि ये वाला पार्ट, नहीं तो जो इससे काफ़ी छोटे हैं द राइट मोस्ट पार्ट वो इधर पे रिप्रेजेंटेड हो रहा है। सो वी कैन से कि हम किसी भी एलिमेंट पे बैठ के ये डिसाइड कर सकते कि हमारा वैल्यू वो कहाँ पे होगा। अगर वो ए से बड़ा है, हमें पता है ये ए है, अगर वो ए से बड़ा है तो ठीक है, दो तरीका है, मिड से कंपेयर करो, मिड से कम होगा तो यहाँ पे ढूंढो, नहीं तो यहाँ पे ढूंढो। तो ये क्या है अपना राइट हाफ, राइट, ये है लेफ्ट, ये है राइट। तो ऐसा है अपना बाइनरी सर्च का तरीका। यहाँ पे देखिए हम दो ही पार्ट में बांट रहे हैं बट चेकिंग 2 और 3 कंडीशंस, चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस, बट बांट रहे हैं हम वही दो पार्ट में। प्रॉपर्टी एक ही यूटिलाइज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने के बाद हम इन्फर कर रहे हैं कि एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है बट फिर भी एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़ रहे हैं, दैट इज द मोनोटोनिसिटी। ओके, so this was actually an example to show that binary search does not require essentially a sorted array। वो एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे किसी भी दूसरे टाइप के एरे में या डेटा स्ट्रक्चर में वो अप्लाई किया जा सकता है इफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी इज हेल्ड। सपोज आपको पता है कि एक एरे में पहले आपके वंस होंगे, फिर आपके जीरोज होंगे, फिर आपके टूज होंगे। सो आप हमेशा इसमें भी लगा सकते हैं बाइनरी सर्च टू फाइंड आउट व्हाट, सपोज द मिडिल जीरो। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको मिडिल जीरो निकालना है तो आप लेफ्ट मोस्ट जीरो निकालेंगे, राइट मोस्ट जीरो निकालेंगे और फिर मिडिल वाला वैल्यू। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इज दिस एरे सॉर्टेड? डेफिनेटली नॉट, इट इज नॉट सॉर्टेड, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉपर्टी कि 1 के बाद 0 ही आएगा, 0 के बाद 2 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। मतलब 0 के बाद या तो 0 फिर नहीं तो 2 ही आएगा, एंड वंस यू स्टार्ट विद 2 बाद में कुछ नहीं आएगा। सो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। So the question I mentioned here is कि 0 के लाइक मिडिल वैल्यू, मिडिल वाले पोजीशन को निकालना है, जीरोस जहाँ भी प्रेजेंट है उसके मिडिल पोजीशन को। So the question is it sorted? No. Can we apply binary search? Definitely. This can be solved in order log n time. So यहाँ देखिए मानस ने एक एल्गोरिथम सजेस्ट किया था कि वी सर्च इट इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिफिकल्टी वही है कि आपको निकालना पड़ेगा कि व्हाट आर द 2 पार्ट्स, कहाँ पे ये दोनों पार्ट्स हो रहे हैं। उसके लिए आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस ए एलिमेंट। यू कैन चेक कहाँ पे जाके आपका पहला एलिमेंट मिलता है जो कि लेस देन ए है। ये जो पार्ट है ना ये लेस देन ए है, ये पूरा पार्ट लेस देन इक्वल टू ए है, तो आपको पहला एलिमेंट इधर से मिल जाएगा। सो यू कैन फाइंड आउट दिस एंड वंस यू फाइंड आउट दिस व्हाट कैन यू से, एक बार इधर बाइनरी सर्च करेंगे, एक बार इधर, तो आपको पता ही हो जाएगा। एक्चुअली इधर बाइनरी सर्च करेंगे तो आपको पता होगा इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, तो एक ही में बाइनरी सर्च करना होगा एक्चुअली। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट एक बार आपको बाइनरी सर्च करना पड़े ये निकालने के लिए ये कहाँ पे पार्टीशन हो रहा है, और दूसरी बार आपको बाइनरी सर्च करना पड़े विद इन द कंसर्न रेंज, या तो लेफ्ट में नहीं तो राइट में। सो देयर 2 स्टेप्स ऑफ बाइनरी सर्च। जो प्रॉपर्टी मैंने इधर कहा कि यू हैव दिस कॉन्ट्रास्ट ए टू मिड इन द लेफ्ट एंड दिस पर्टिकुलर रेंज इन द राइट, यूजिंग दिस यू कैन सॉल्व इट इन 1 इटरेशन ऑफ बाइनरी सर्च। यही कि आप इधर पे ही 2 कंडीशन कंबाइन कर दिए, ठीक है। सो दैट्स इट। Any ideas, any doubts you can pitch up? Else before closing we will see another important thing, the batches which are going to be offered at Unacademy. I hope this session was interesting. I hope you learned the basics of binary search, and I hope that whenever you will be asked to speak in a few lines about binary search, you will keep all these possibilities in mind, जहाँ पे sorted होता है, जहाँ पे sorted नहीं होता है, and you will keep that single thing in mind कि monotonicity क्या होता है। और भी काफ़ी एग्जांपल्स कर सकते हैं इन द फ्यूचर सेशंस टू एस्टेब्लिश बाइनरी सर्च। इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। थैंक्स फॉर दिस। ओके, या
So this is the final thing for today. कोई डाउट से तो पूछ सकते हैं, but I will tell you in short about the batches that we are going to offer at Unacademy in the coming days. महायोद्धा एक एडवांस प्रोग्रामिंग का टॉपिक्स है, एक 2 month मास्टर कोर्स है. एकलव्य 2.0 इज़ अ जावा कोर्स जो बिगिनर्स के लिए है, 8 months का है, आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा. एंड ब्रह्मास्त्र है फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, ये आपके प्लेसमेंट्स के टॉपिक पर फोकस करेगा. सो इट इज़ ऑफ 5 months. Mahayoddha, as per the current schedule I am taking, and definitely you can have other educators as well. फिलहाल मैं लेने वाला हूँ. This is on advanced courses starting on 6th of July. Eklavya 2.0 is an 8-month course. हाँ, 8 months course which is starting on again 6th of July. And Brahmastra is for interviews relating to placements. What you get through batches is actually a structured learning path. एक आपका structure मिल जाता है पढ़ने के लिए. काफ़ी सारे sessions एक साथ एक structure में आप पढ़ सकते हैं. In one subscription you have unlimited access to all batches, and you can successfully contest in competitions. You can crack interviews. You'll get the best coders of India as educators. Subscription fee nominal रहता है ₹90 per day. So important thing is that एक बार subscription लेके आप सारे batches and courses उस टाइम तक एक्सेस कर सकते हो. ये सारे अगर आप एक साथ एक्सेस करना चाहते हो आप कर सकते हो. एंड दिस इज द सब्सक्रिप्शन फी टोटल इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू वॉच, whom you follow. आप किसी को भी फॉलो करो, यू विल एक्चुअली गेट दिस. सो अबाउट दिस महायोद्धा कोर्स विच आई एम गोइंग टू टेक, दीज आर बेसिकली द टॉपिक्स. ये आपके वीक 1-2 में चलेगा. कॉम्बिनेटोरिक्स, एडवांस्ड कॉम्बिनेटोरिक्स होंगे, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशंस, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, ये रहेंगे आपके वीक 1-2 में. फिर आपके आएंगे एडवांस डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लेके चलेगा. हाँ, 3 क्लासेस चलेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ रहेगा. फिर आपका सेगमेंट्रीज है, फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ थ्योरी है, और इस पर काफ़ी हम स्ट्रेस करने वाले हैं. एंड वीक 8 इज अ मिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. काफ़ी स्ट्रेस ग्राफ थ्योरी में आने वाला है. ओके, दैट्स इट. एंड देन वी हैव एकलव्य जो बिगिनर लेवल टॉपिक से चालू होगा. यू हैव द प्रिपरेटरी कोर्स ऑन बिल्डिंग ब्लॉक्स, देन यू हैव इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यू हैव सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, फिर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर एडिशनल कंसेप्ट्स होगा जहाँ पे आप C++ में कोड करना सीख जाएंगे, जावा से C++ में. एंड देन you'll have greedy algorithms with classical problem solving. You'll have square root decomposition, tries and segmentaries, number theory and interview questions, recursion and dynamic programming, and graph algorithm with extensive problem solving. ये आपके टॉपिक्स हैं. फिर आपके आते हैं ब्रह्मास्त्र जिसमें सिर्फ इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक्स हैं. इसमें प्रिपरेटरी कोर्स, बेसिक फंडामेंटल्स, रिविजिटेड. इसमें यही एज्यूम किया जाएगा कि आपने कॉलेज में वो कुछ चीज़ें किया है, एंड देन दे विल बी रिविजिटेड ओनली. फिर मैथ्स एंड पजल्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, थोड़ी मैथ्स रहेगी, थोड़ी वो पजल्स वगैरह रहेगी. फिर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, हैंड पिक्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, बिट मैनिपुलेशन एंड बैक ट्रैकिंग, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग एल्गोरिदम्स, आपके वो जो KMP होते हैं वो सब, Z एल्गोरिदम, ड्रैबिन कार्प एंड मैनेजर, वो सब थोड़े बहुत आ सकते हैं. फिर एडवांस डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ एल्गोरिदम्स, इंटरव्यू प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन FANG और टॉप प्रोडक्ट कंपनीज. सो 22 वीक्स में आपकी ये पूरा इसका पूरा मॉड्यूल कवर किया जाएगा इंटरव्यूज़ का. These are your educators. You have ICPC World Finalists, you have Code Forces Grandmasters, alumni of top product companies. So speaking about myself, I am a 6-star rated coder at CodeChef and a master at Code Forces. And I've been to the ICPC regionals in 2019. That's about myself. So you will get live interactive classes and practice relevant problems at CodeChef, and you will get TA doubt support. So you'll get interaction with TAs for your doubt clearing. Here and we also sometimes aid over there as educators. We also take part in clearing your doubts. You have Tanuj Khattar, Pulkit Chabra, and they all have good portfolios. You can go through them. Good experiences. And that's it. So over here you go. This is the pricing. एक महीने का लेना चाहते कुछ भी एक महीने लेकर कुछ भी कीजिए, 6,000. Then you have 16,000 for 3 months, 27,000 for 6 months, 33,000 for 12 months. और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डिस्काउंटेड है 11%, 12, 25%, 54%. But on top of this, if you use my referral code, you will get an additional discount of 10%. ये जो राइट में आता है इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा if you use my referral code Saptarshi1729. So that's it. यही कहना था. Any last doubts? Else we can wrap up with this. You can explore the batches at Unacademy and you can see if anything suits you. You can try them out.
सो आई एम सॉरी ये 14 मिनट एक्सटेंड हो गया. I hope you all learned something about binary search. You all learned the intuition, complex problem solving. कभी दूसरे सेशन में देख सकते हैं. I'll pick up some complex problem and I'll discuss that how to actually build the intuition about binary search. But it is that single thing, monotonicity. Keep that single word in your mind whenever you have to think about solving a problem. If there is monotonicity, binary search can help you. Okay. Cool. So take care, keep coding, get yourselves vaccinated, and um, if you are interested in computer programming, तो ratings increase कीजिए, participate कीजिए, upskill yourselves, and all the best. Okay. Goodbye. Take care.